Hello bachcho, let us see this passage type question. According to VBT, any covalent bond will be formed by overlapping of atomic orbitals of bonded atoms, provided atomic orbitals must be half-filled and electrons be in opposite spin. According to the type of overlapping, covalent bonds can be classified as sigma bond, pi bond and delta bond. So if F2C1 double bond C2 part of F2C1 double bond C2 double bond C3 double bond C4 F2 lies in YZ plane, then incorrect statement is, हमें ये चारों ऑप्शन में से incorrect statement find out करना है nodal plane के बारे में. Let us solve this question. So nodal plane क्या होता है? Nodal plane, the plane passing through the point node to this node. Node is the area where there is no probability of finding the electron. So this is the point where probability of finding the electron is 0, and the plane passing through this plane is also 0. This is called nodal plane. So let us solve this question. C double bond C double bond C double bond C, ये दिया है क्वेश्चन में और ये बोल रहा है C1 C2 C3 and C4, and this is connected to two fluorine atoms and this is connected to two fluorine. And question in option A क्या दिया है? Nodal plane of pi bond between C1 and C2 lies in XY plane. ये क्वेश्चन में दिया है ना C1 C2, वही खुद दिया है C1 C2 part that is lies in XY plane. So here also it is in XY plane. That is correct only. The nodal plane of pi bond between C1 and C2 lies in YZ plane, formed by sidewise overlapping of px orbital, because as it is YZ plane and YZ plane perpendicular direction, we have px orbital. So px they overlap laterally and forms pi bond. This is the correct statement. Next, option B, nodal plane of pi bond between C2 and C3, ये दोनों के बीच में, lies in XZ plane, formed by sidewise overlapping of py orbital. So ये हो गया px ऑर्बिटल के वजह से नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है. यहाँ पे नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ py ऑर्बिट. So this is also correct. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. So ऑप्शन डी देखेंगे. नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3, सेम C2 एंड C3 के बारे में. सेकेंड बी में भी C2 C3 और डी ऑप्शन में भी C2 C3 के बारे में. यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड प्लेन, दोनों में एक्स जेड एक्स वाई प्लेन. If xz is a molecular axis, then y is forming pi bond. If y and x are molecular axis, then z is forming pi bond. Yes, this is also correct statement. हमें क्या find out करना है? Incorrect statement. The nodal plane of pi bond between C3 and C4, ये देखो C3 and C4 lies in YZ. If it is in YZ plane, the other one means X. Px should form the pi bond. So Px orbital overlaps laterally or sideways to form pi bond, and that nodal plane existed like that. So क्या होना चाहिए? YZ plane में px orbitals pi bond होना चाहिए. So because YZ के plane में pz orbitals perpendicular रहते हैं ना, इसलिए यहाँ पे px orbitals होना चाहिए. बट ऑप्शन में क्या दिया क्वेश्चन में और थर्ड ऑप्शन में py ऑर्बिटल करके दिया है, ये गलत स्टेटमेंट है. वहां पे px ऑर्बिटल दिया तो वो भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. ऑप्शन सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. होप यू अंडरस्टूड. गुड लक.